Hello, Assalamu alaikum everyone. Hassan here. You are watching Parhlo and welcome to another exciting episode of Tech Buzz. और Tech Buzz के आज के एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं Realme Narzo 30A. So without any further ado, let's get started. और सबसे पहले बात करेंगे इसके बॉक्स डिज़ाइन की एंड दिस टाइम Realme ने हम लोग को येलो बॉक्स नहीं दिया बल्कि उन्होंने एक ब्लू कलर का बॉक्स दिया है कि इंस्टेड ऑफ द टेक्स्ट बीइंग ऑन द हॉरिजॉन्टल साइड इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो वर्टिकल साइड पे इन्होंने दिया है और इसके अंदर हम लोगों को Realme का लोगो मिलता है ऑन द टॉप साइड एंड इसके साइड पे अगर हम देखें तो Narzo पावर्ड बाय Realme लिखा हुआ है एंड ऑन द बैक साइड इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है Narzo 30A। कुछ की फीचर्स लिखे हुए हैं इसके और कुछ वेरिएंट डिटेल्स लिखी हुई हैं ऑन द बैक साइड। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इसको अनबॉक्स करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट कंपोनेंट्स वी फाइंड इनसाइड द बॉक्स। इनसाइड द बॉक्स वी फाइंड अ ब्लू कलर्ड फोन, यूजर गाइड बुक्स विद सिम इजेक्टर टूल, Realme official charging brick and USB Type-C cable. Sadly, there are no headphones or a silicone case. Realme Narzo 30A का जो वेरिएंट हमें मिला है वो 4GB of RAM and 64GB of storage है। It also comes in 3GB RAM and 32GB of storage variant और जो कलर हमारे पास है वो लेजर ब्लू है but it also comes in a laser black color as well। फोन के बॉटम पे हम लोगों को मिल जाती है 3.5mm हेडफोन जैक, मेन माइक्रोफोन, USB Type-C पोर्ट और स्पीकर ग्रिल। फोन के राइट साइड पे हम लोगों को मिल जाती हैं वॉल्यूम कीज एंड द पावर बटन, डुअल सिम ट्रे स्लॉट ऑन द लेफ्ट साइड एंड द टॉप ऑफ द फोन इज क्लीन। इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Realme UI 1.0 है दैट इज बेस्ड ऑन Android 10 and MediaTek Helio G85 12 nanometers gaming processor. The CPU is octa-core and the GPU is Mali G52. एंड प्रॉबेबली इसके अंदर Realme UI 2.0 की अपडेट भी आएगी। और इस फ़ोन का मोस्ट अमेजिंग फीचर जो कि इसकी गेमिंग है उसकी बात करें तो काफ़ी ब्रिलियंट गेमिंग है नो डाउट। और इसका जो प्रोसेसर है वो इस प्राइस रेंज के अंदर काफ़ी पावरफुल इन्होंने दिया है दैट इज़ MediaTek Helio G85 12 nanometers processor. You can play high-end games and graphics without any trouble on this phone. The gaming and the processing of this phone is really good. And it is also the best budget gaming phone by Realme in the market right now. और इसके बैक कैमरास की बात करें तो डुअल कैमरा सेटअप है with 13 मेगापिक्सल्स f2.2 5p लेंस and 2 मेगापिक्सल्स f2.4 मोनोक्रोमैटिक कैमरा। और इसके फ्रंट कैमरा की बात करें तो 8 मेगापिक्सल्स का मिनी ड्रॉप f2.0 वाइड एंगल कैमरा है। Realme Narzo 30A के डिस्प्ले की बात करें तो 6.5 इंचेस की मिनी ड्रॉप स्क्रीन है with a resolution of 720 pixels by 1600 pixels HD+. It has an IPS LCD display. The brightness is also very good in direct sunlight. The pixel density is 269 pixels per inch and the peak brightness of the screen can go up to 570 nits. इसकी बैटरी की बात करें तो it has 6000 mAh battery. It also supports 18 watts fast charge and it also supports reverse charge as well. It also has an ultra fast fingerprint scanner and it also supports the face unlock feature as well that is based on the front camera. इसके डिज़ाइन की बात करें तो इसकी प्लास्टिक बैक है and it also has a dual texture back. और बैक डिज़ाइन का जो अपर पार्ट है वो काफ़ी स्मूथ है बट द लोअर पार्ट हैज़ अ टाइनी टेक्सचर टू इट जिसकी वजह से इस फ़ोन की ग्रिप बहुत अच्छी हो जाती है। एंड द गुड थिंग अबाउट द बैक डिज़ाइन ऑफ दिस फ़ोन इज़ दैट कि इसका जो कैमरा सेटअप है इट हैज़ अ वेरी मिनिमल बम्प टू हिट जो कि आपको इतनी आसानी से फील नहीं होता। दैट इज़ अ वेरी गुड फीचर इन दिस फ़ोन। एंड वन मोर कूल फीचर टू इट्स बैक डिज़ाइन इज़ दैट कि ये फिंगरप्रिंट रेजिस्टेंट है एंड द बॉडी ऑफ द फ़ोन हैज़ अ कर्व डिज़ाइन। इसके वीडियो प्लेबैक की बात करें तो इट हैज़ गुड विजुअल्स एंड डिस्प्ले. Brightness is also good in sunlight as well and the colors and the vibrance of the screen is satisfactory. और Realme Narzo 30A की प्राइस की बात करें तो इट हैज़ अ ग्राउंड ब्रेकिंग प्राइस ऑफ अराउंड 20,000 पाकिस्तानी रुपीज़। और इस प्राइस रेंज के अंदर आपको इस फ़ोन के अंदर जो प्रोसेसर मिल रहा है और जो 6000 mAh की मैसिव बैटरी मिल रही है
That makes it the best budget gaming phone in the market under 20,000 Pakistani rupees. Camera is on the average side, but the battery and the processor is worth it in this price range. Do check this phone out if you are a gamer. Realme Narzo 30A is the best budget gaming phone by Realme in the market right now. So yeah, that's pretty much about it for the review. उम्मीद है आपको आज का रिव्यू पसंद आया होगा. If you have any questions or queries, please let us know in the comments below. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो please like, comment and share on Facebook. Follow us on Instagram and do subscribe to our YouTube channel as well. Until next time, Allah Hafiz.